Very good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of business studies. Now, in this lecture 5, I am going to start your chapter 2, that is principles of management, and the topics which I am covering in this lecture is meaning of principles of management, management principles versus pure science, management principles versus values, nature of management principles, importance of management principle. Now see beta principles of management. What is principle? A principle is a fundamental truth or proposition that serves as the foundation for a system. Principle वो fundamental truth या proposition है जो कि आपको serve करता है as a foundation for a system. It is a belief or behavior or for a chain of reasoning. ये आपका belief है, behavior है, आपका chain of reasoning है. Principles of management. अब management principles क्या है बेटा? Principles of management are broad and general guidelines for managerial decision making. Manager के decision making के लिए जो broad और general guidelines होती है that is management principles. It is a behavior of a manager in the organization, how he has to work. Management principles are not as rigid as principles of science, as this deals with human behavior and thus are applied creatively given the demands of the situation. Management principles are not as rigid as general as science because management principles deal with human being, and as and when environment changes, this principle has to be changed. It is flexible in nature. Now see difference between management principles versus pure science. Principles of management are different as pure science. Principles of management are not rigid as principles of pure science. Pure science आपका जो है human behavior पे apply नहीं होता है. So it is a rigid principles in science, but in management the human behavior पे apply होता है principle. So it is flexible. Number 2, principles of management deals with human behavior and cannot be tested in laboratories like the principles of pure science. Principles of management human beings को deal करता है, इसलिए इसको हम laboratory में test नहीं कर सकते, but pure science का जो principle है it can be tested in laboratory. Principles of management are general guidelines whereas principles of pure science are specific. Principles of management general guidelines है, principles of pure science specific है, which is used in the particular in all over the universe without any particular changes. Now see management principles versus values. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को वैल्यूज से हम कैसे डिफरेंट करते हैं. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल एक्शंस वेयर एज वैल्यूज आर रूल्स फॉर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी. मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइडलाइन है जनरल एक्शन का, लेकिन वैल्यूज़ हमारे रूल्स हैं, हमारे एथिक्स हैं, हमारे नॉर्म्स हैं जो एक इंडिविजुअल यूज़ कर रहा है ना सोसाइटी. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर टेक्निकल इन नेचर वेयर एज वैल्यूज़ आर एथिकल इन नेचर. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टेक्निकल हैं लेकिन वैल्यूज़ हमारी एथिक्स हैं, नॉर्म्स हैं, सिविक्स हैं जिसको हम यूज़ कर रहे हैं इन द बिजनेस. Now next topic is nature of management principle. The nature of principles of management can be described in the following point. It is nature, features and characteristics of management principle. Number 1, universal applicability. Management principles are not confined to one area, one reason, one section, one environment, one level, but it is applicable in all over the business, in all type of organization, whether it is business organization or non-business organization, it is applicable. In a small size or in large size, it is applicable. Number 2, general guidelines. Management principle, they are general guidelines to action and decision making. However, they do not provide ready-made solution as the business environment is ever changing or dynamic. Management principles एक general guidelines है. They are not providing a basic solutions या ready-made solution because management principles dynamic है, change होता है as per the environment. So it is a general guideline which has to be used by the managers in the organization. Number 3, formed by practice and experimentation. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है रिसर्च के थ्रू डेवलप होता है और टाइम टू टाइम ये बेस्ड होता है ऑन द प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द मैनेजर, उतना ही ये परफेक्ट होता जाता है. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल क्यों? बिकॉज इट हैज़ टू अडॉप्ट द चेंजेस ऑफ द इन्वायरमेंट. जैसे इस समय आपके कोविड-19 की सिचुएशन आई, अब दोबारा से आपका कोविड हो गया, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं. इन बिजनेस ऑल्सो मैनी थिंग्स आर बीइंग चेंजिंग, तो इट हैज़ टू अडॉप्ट एज पर द इन्वायरमेंट. Mainly behavior. Since the principles aim at influencing complex human behavior, they are behavior in nature. Means ये डिपेंड करता है बिहेवियर के ऊपर. ह्यूमन बींग का हर जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ आते हैं दे आर ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स, तो उन बैकग्राउंड्स के भी एम्प्लॉयज़ के साथ डील करना, उनको एज अ बिजनेस में कोऑर्डिनेट कराना, उनको यूनाइट करना उनके एफर्ट्स को, दैट इज़ मैनेजमेंट प्रिंसिपल. तो इट डील्स विद बिहेवियर. Causes and effect relationship. Management principle, they intend to establish relationship between causes and effect because what is कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पर अप्लाई होते हैं, अप्लाई होकर के हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द रिजल्ट, देन इसको हम जो है सिमिलर सिचुएशंस में यूज़ करते हैं. इफ द रिजल्ट इज़ पॉजिटिव देन इट कैन बी यूज इन द बिजनेस, लेकिन अगर इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है तो हैज़ टू बी चेंज. तो इट इज़ बेस्ड ऑन कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. देन कॉन्टीजेंट. मैनेजमेंट प्रिंसिपल कॉन्टीजेंट है, मीन्स इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ टाइम, उसके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट प्रिंसिपल यूज़ होते हैं.
Then significance or importance of management principle. Significance importance क्यों, why management principles are used in the organization. What is the importance of management principle? Number one, providing managers with useful insights into the reality. Management principles guide manager to take right decision at right time by improving their knowledge, ability and understanding of various managerial situation and circumstances. Management principle provide guidelines to the managers so that they can take right decision at right time and they can improve their knowledge, ability and they can understand the various managerial situations in the organization. Number two, optimum utilization of resources and effective administration. Through management principle, it facilitates maximum use of resources at minimum losses. So it means management principles बताता है आपको how to coordinate with physical, financial and human resources of the business. ये help करता है in better administration by discouraging personally deal नहीं कराता है management principle, deal in all. So वो जो है better administration के लिए effective है. So it helps in achieving the target of the business also. Number three, scientific decisions. Management principles based हैं आपके जो है मोर रियलिस्टिक है बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट. तो इट हैज़ टेकन पर्सनल बाइस से अलग होते हैं. मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर ऑल. सो इट इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक डिसीजंस. देन मीटिंग द चेंजिंग ऑफ इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपके डायनामिक नेचर के होते हैं, तो जो भी इन्वायरमेंटल के चेंजेस है उसको मीट करने में वो हेल्पफुल होते हैं. Fulfilling social responsibilities. Principles of management not only help in achieving organizational goal but also guide managers in performing social responsibilities. Means equity and fair work करना, employees को salaries, wages timely provide करना, that is management principles. Means वो हमें एक guideline provide करता है how the managers are social responsible in the organization. Management training, education and research. Management principles help करता है in identifying the areas जहाँ पे employees को training दे सकते हैं, उनको base कर सकते हैं for the research also. So beta, management principles are most important. It is a general guideline by which a management work. It gives a behavior to the management. So management principles are very important in the organization. I hope you all understand. Thank you beta. Have a nice day.